Hi guys, a very good morning to all of you. I'm Saba, your English faculty at Oliveboard. So just confirm me once if I'm audible to you all. क्या सभी लोगों के लिए मैं live हो चुकी हूँ? So today also we are going to have amazing questions. So we will quickly start today's session. Amazing questions. So we will Good morning, Raja, Purv, Arnav. So a very good morning to all of you, Harsh, everyone. Okay. So thank you guys for confirming. So if I will come to yesterday's homework quickly. कल के homework पे मैं आऊंगी. Many of you did the homework and I'm happy that you all got the right answer. सबने homework किया था और maximum के answer सही हैं. I thought कि आपको कहीं पर doubt होगा ये question में मुझे था कि आप लोग गलती करेंगे. But yes, you may people maintained accuracy. So except one or two, rest everyone did the correct. Okay. Good morning, Sandeep. Good morning, everyone. So, good morning, Alu Samosa, Devdeep, Chetna, everyone. A very good morning to all of you guys. So, today also we have some excellent questions. Let's start. Okay. ना तो मैंने देखा किसके भी हैं. We will see. So, we'll give the answer. Sorry. अंकिता, आदित्य, अर्जु, सबरी, मधुरिमा, दयानिधि, प्रणय, जय नवीन, then Venu, Manish, Harendra, Nidhi, Prashant, Ramalakshmi, Avinash, Vaibhav, Arnav. So all these people did the homework. Okay, सबने homework किया था. Arnav, I couldn't check your homework because you did late. तो मैंने यहाँ पे लिखा तो है, but I couldn't check. तो मैं check कर दूंगी. Don't worry. खैर, आंसर तो अभी clear हो जाएगा आपको. So see, the question that we gave yesterday was para based questions. जैसे आपने पीओ में देखा होगा, स्पेशली एसबीआई पीओ में भी ये वाला पैटर्न बहुत कॉमन होता है कि पैरा बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड. कि एक पैरा दे देगा, यू कैन बी आस्क्ड पैरा समरी, पैरा फिलर, tone of the passage, situation based question, so anything can be asked. Okay, so para based question से भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इट वाज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ पैराफिलर्स. सो टुडे आल्सो वी हैव वन और टू क्वेश्चंस ऑफ पैराफिलर्स. सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ पैराफिलर्स. तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक दिया गया है एंड यू हैव टू फिट द राइट वर्ड हियर, या सॉरी राइट सेंटेंस हियर. कि you have to analyze the sentence before the blank and after the blank. Analyzing all these things, you have to mark the correct answer here. Okay. So what it is given, what the world did notice, however, was an astonishing tech boom. कि वर्ल्ड ने जो नोटिस किया था कि टेक बूम, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा राइज कर रही थी. ओके, देयर वाज ड्रामेटिक राइज इन टेक्नोलॉजी दैट द वर्क नोटिस्ड. ओके, यस. एग्जाम में भी सब ऐसे ही आता है. देखिए अभी यही क्वेश्चन मैं एलपीएस में दूंगी ना, तो वहां पे एक्यूरेसी 10% हो जाएगी. सो टाइम प्रेशर व्हेन यू डू सेम द सेम क्वेश्चन हैविंग योर टाइम, यू डू नॉट हैव एनी प्रेशर, वो आपका टाइमर नहीं चलता होता है, तो सारी चीजें इजी लगती हैं. बट द सेम थिंग व्हेन यू गेट इन एग्जामिनेशन, तो ये चीजें आपको एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग टाइम रख के करना है. बिकॉज आई नो कि इजी से इजी क्वेश्चन भी जब मैं एलपीएस में दे देती हूँ तो एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है. ओके, सो मैं बार बार कह रही हूँ कि एग्जाम को ऐसा मत सोच के जाइए कि एग्जाम इज समथिंग कि जो आपसे होगा ही नहीं. तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं होगा जब सारी चीजें होंगी ही नहीं. तो ऑल आर डुएबल, बस आप वहां पर क्या कर सकते हैं, दैट इज ओके. See, now the question is, ki, ma'am, why there is however? So actually, this is just a paragraph. You do not know what is the beginning of that paragraph. Okay, so they might have taken. Suppose this might be the second paragraph of any article. तो किसी article का इन्होंने second paragraph ले लिया होगा. So para-based questions में you will not get the complete origin, introduction and conclusion part. So from anywhere they will take one paragraph, and in that paragraph they will give you one filler or summary, something like that. So is it clear, Arju? So what the world did notice, however, was an astonishing tech boom. So technology was on rise. A South Korean startup launched a new battery that stood twice as. अब देखिए सारे एग्जांपल दे रहे हैं कि एक साउथ कोरियन स्टार्टअप था, उसने एक नई बैटरी लॉन्च की that can store twice as much energy as your laptop battery. Okay. Then we have a Finnish firm released cheap solar panel with twice the efficiency of the best competitors. मतलब स्टार्टअप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द गिवन. जर्मन कंपनी की बात हो रही है. ओके, बॉस्टन बेस्ड बायोटेक ग्रुप की बात हो रही है. सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर गिवन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? But they dramatically disrupted the economy. No, we are talking about positive. यहाँ भी positive है, यहाँ भी positive ही है. So they are doing good work. In ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में. So that is the sense we are getting. What the world didn't notice, thanks to the hard work of crack team of lawyers, ये तो बिल्कुल out of the context है. Upstart companies around the world were launching, yes, they were launching revolutionary products in almost every area. तो हर एरिया की बात की गई, अगर आप देखेंगे तो टेक की बात की गई है, बायोटेक की बात की गई है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, देयर इज नो कंफ्यूजन. ओके,
नेक्स्ट, आज का ये पैराफिलर ज्यादा अच्छा है बिकॉज वहां पे ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे. ओके, नेक्स्ट. नो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? यहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छा था बट स्टिल यू पीपल मेंटेन एक्यूरेसी. Thanni, I have to keep it bilingual. I will explain you if there is something. I will try to keep it bilingual. Okay, English and Hindi both, so that none of you face any problem. So it is clear to everyone. So English is everywhere and everywhere. English is everywhere and everywhere means you know it is an international language. So everywhere you will have English. कि इसका presence आपको हर जगह दिखेगा ही दिखेगा. Okay. Tone, actually we have done so many times. Tone we have discussed initial when I started taking article, the first thing that I did was I discussed tone only. So still if you guys want, so in one or in some editorial session only I will discuss all tone, because editorial only we discuss the tone, so there only I will discuss all types of tones. Okay, so for that you will have to be regular in editorial sessions. English dominates, not dominoes. So English is everywhere. If something is everywhere, so of course it will do what? It will dominate. Okay. Dash. Almost 400 million people speak it as their first language. A billion more know it as a secondary language. It is an official language in at least 59 countries. The unofficial lingua franca of dozens more. Lingua franca means the adopted language. Basically, something that English is adopted language or lingua franca for Indians. It is not our own language. It is our what? Adopted language. नहीं, रात में तो नहीं खाया था मैंने पिज्जा, तो बट वो डोमिनोज याद आ गया मुझे. So no language in history has been used by so many people or spanned a greater portion of the globe. तो यहाँ पे इंग्लिश के डोमिनेशन की बात हो रही है and how it has evolved that we are talking. Okay. So in a multilingual post-colonial society like India's, it is not making any sense. English has more or less a constant position except in the Northeast, in the elite schools of, देखिए option that is very far-fetched, जिसका कोई मतलब बिल्कुल remote जो है इसको पहले, we are not talking about any school or anything. We are talking about the dominance of English in the entire world. So this option will also be eliminated. This can also be eliminated. Okay. Actually, the word was very close now, so it was just slip of tongue that instead of dominates, I said dominoes. Okay, so I don't enjoy eating pizzas and all that much, so I'm not that craving for all these things. Okay, I don't have that craving. So from inauspicious beginnings on the edge of a minor European archipelago, it has grown to archipelago. I know, I hope you all know that is a group of islands. Now for this you should know the origin. देखिए options elimination के basis पे आपको हो सकता है, but I hope you will be like shocked to know कि English didn't start in England itself. ये British में start नहीं हुई English. It started in Germany. One group of island was there on Germany. From there this language came. So there said that from inauspicious beginnings on the edge of a minor European archipelago. Okay, it has grown to vast size and astonishing influence. So C is the right answer because we are talking about the influence of English. And there only everywhere it is given that people have adopted English as the language. Okay. So it is everywhere and everywhere. Yes, Abhinaya, it is mains level, and today also we will have mains level questions. Okay. So all these things we are not getting, C is the correct answer. Options elimination will help you here. Now guys, please concentrate here. Those who have not subscribed to our YT channel, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर YT चैनल वंस. एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन विद मैक्सिमम. ओके, कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. एंड इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अवर ऑलीबोर्ड ऐप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. क्लिकिंग ऑन दैट लिंक यू कैन डाउनलोड अवर ऑलीबोर्ड ऐप ऑल्सो. सो प्लीज डू दैट. Yes, Vinay, it will cover live classes. I will tell you about the courses also. Okay, so everything I will tell you. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, vocab based. Hurry up, guys. Go through the directions and then give the answer. 4:30. No gym. No gym. I wake up at 4:30. No gymming at all.
See, now vocab, you will get very good words, close words you will get. So you should know the meaning of every word, then only you will be able to mark the answer. Now I want full concentration on the session itself. Okay. Here the direction is a word is given and five options are there. Okay. So you have to find the word that is nearly same or opposite. Either it can be synonym or it can be opposite. Okay. So you have to see that. So prodigy basically we call to this is a very very common term of SSC examination. SSC में बहुत पूछा गया ये word prodigy. Prodigy basically we call to child with remarkable talent. चाइल्ड विथ रिमार्केबल, जैसे बीच में कुछ कुछ चाइल्ड का आप देखेंगे बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल होता है, जैसे कौटिल्य एंड ऑल, इस तरह के चाइल्ड के बारे में आपने सुना होगा. सो यस, प्रोडिजी बेसिकली वी कॉल टू अ चाइल्ड विथ रिमार्केबल टैलेंट. Talent, you can say genius. Okay, so genius child is called this. Genius child is called prodigy. Okay, so pauper basically we call to poor. Pauper, poor, destitute, all these are synonyms. Okay, pauper we call to a person who is extremely poor. Now please focus on vocab. Someone was saying कि मैम vocab का marathon ले लीजिए, vocab आप हर जगह सीख सकते हैं. Everywhere you can learn vocab. Okay, so poor, destitute, all these are the synonyms. Okay, impoverished, ये सारे के सारे synonyms हैं. Despondent basically we call to someone that is disheartened. तो discouraged हो गया, disheartened हो गया, that person is called despondent. It is an adjective. Demure basically we call to modest, a person who is very modest. Okay, so that is called demure. Wanton basically we call to, देखिए want we call to lack of something. Want something means lack of something. But wanton is a negative word. It is an adjective. It is an adjective. It means malicious. You can say cruel, licentious, licentious, you know, na, immoral person. So all these are the synonyms. Now what will be the answer? Yes, shy also you can say modest, shy, and assuming all these are the meanings. Okay. Yes, correct, Krishan. So the answer will be none of these. Very good. So when you know the meaning of each and every word, if we will have till mains examination, we will have these. बीच में हो सकता है मैं SBI का session ले लूं because we have upcoming SBI examination also. So but still it will be there. इस वीक तो रहेगा ही रहेगा. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए, नन ऑफ द अबव, बिकॉज बाकी सारे आपको, इफ यू नो द मीनिंग यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर. अगर सारे वर्ड की मीनिंग नहीं पता तो कभी नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन डिस्क्रिप्ट. नॉन डिस्क्रिप्ट. अब देखिए इतना हम लोग वो कैप करते हैं बट स्टिल एग्जाम में आपको नए वर्ड दिखेंगे ही, सेशंस में भी न्यू वर्ड आपको दिख जाएंगे. तो एक्चुअली ये एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स हैं, आईबीपीएस पीओ में ही पूछे गए वर्ड हैं. कोर्स आई विल टेक डिस्क्रिप्टिव सेशन गॉड ऑफ थंडर. मैंने बोला है मैं लूंगी तो मैं लूंगी, इसी वीक लूंगी. ओके, not easy, but yes, it is not that difficult also. Yes, correct. D, maximum are saying D. Non-descript basically we call to something that is unexceptional, मतलब जो बहुत exceptional ना हो. जैसे you can call it ordinary, mundane you can call it. Something that doesn't have any distinct feature, जिसमें कोई distinct feature ना हो, कोई remarkable quality ना हो. So that is called non-descript. So you can say call it ordinary, mundane, unexceptional. All these can be the synonyms. तो अगर आप ऐसे antonym देखेंगे, पहले you should know the meaning of all the word. Conducive basically we call to helpful. Conducive environment, helpful. So something that is good for you, जहाँ पे आप अपना काम कर सके, so that is called conducive. Discern basically we call to, discern का basically मतलब होता है to perceive something, to see something, discerning ability. So perceive, see, that is the meaning of the word discern. Okay. Tantamount basically we call to as good as, equal. Yes, as good as, equal. Paramount, superior. Paramount means superior. And mundane is not dull, mundane is ordinary. So some cases you can say dull. Workaday, very good, Ankita Datta. Yesterday only I told you this word workaday. So workaday also we call to, that is something that is ordinary. This is the way you can remember the vocab. Very good. So work a day basically this is also for something that is ordinary. Okay, boring, all these things. So simply lacking any striking feature, that is called non-descript. जिसमें कोई भी striking feature ना हो, remarkable qualities ना हो, that is called non-descript. Okay. So tantamount basically we call to equal.
at par with, on a par with something. Okay. Distinguished will be the antonym. What is the meaning of the word emancipate? Can anyone tell me? So many times in your examination, you get this article to write an essay, women emancipation. What will you write? Whenever you are asked to write something on women emancipation, क्या लिखेंगे आप? Because if you know the meaning of the word emancipation, you know the meaning. Emerge, came out, to decide, yeah, release is the not expected. Women expectation भी लिखेंगे तो ऐसे आपका 2000 वर्ड्स में चला जाएगा, बिकॉज women की expectation कभी कम हो ही नहीं सकती है. Yes, Shubham. Emancipation basically we call to liberation, release from confinement. कि उनको confinement से release कर देना, that is called emancipation. So emancipate we call to liberate. So if you get an essay to write on women emancipation, so women's emancipation means to liberate women from their household confinement. जैसे अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि women को they can't go for studies and all. Yes, you can say liberate, freedom, liberation, freedom, all these things. Okay, liberty you can say. इतना सच कैसे बोल दिया आपने? क्या सच बोल दिया मैंने? Women के अच्छा, you guys need one point. Clear everyone? Distinguished means having some remarkable feature, distinguished quality. So you have some exceptional quality. Distinguished means exceptional, not common. Okay. Next, quickly guys. So सावंत, इसको आप राखी सावंत से याद रख सकते हैं. So that will be this for you. Mnemonics. It is pronounced also as savant. Okay. Itinerant, no. No, Apur, not itinerant. इस वर्ड को आप राखी सावंत से याद रख सकते हैं. Unique, not exactly unique, you will say. Any idea? Anyone who knows the meaning of this word, savant? See, shrink. All guesswork. All guesswork. Anyone who knows the meaning? Very good, invincible. Yes, very good. Savant basically we call to scholar. A person who is very genius, scholar, you can say sage. Basically, ये quality sages के लिए use की जाती हैं. Okay. Intellectual, you can say. Intellectual. So all these are the synonyms. These all are the synonyms of the word savant. Now what can be the synonym? Yes, Lata Mangeshkar ji is a savant. Very good. So intellectual, sage, scholar, किसी भी अपने field का जो बहुत ज्यादा knowledge जिसको होता है उसे कहा जाता है. Okay. See, I just told you that that is the name you all can remember. That Rakhi Sawant is a scholar. That is only the way you can memorize this word. I don't know whether she's talented or not. Okay. So, Krishan, you can't say like that because he is good in other things also. Okay. Now, options you do not know. Glutton can be eliminated because glutton, you know, a person who is greedy, who is voracious. Greedy, voracious, one who eats voraciously. So that person is called glutton. उसे कहा जाता है. Postulant, basically, we call to a person who is novice, inexperienced. जो किसी भी चीज में अभी नया नया आया है. Neophyte, you can say. Neophyte. So many words we have. Navet, so many words we have. Okay, बहुत सारे words हैं. So that is called postulant. Shrink का मतलब आपको पता है. Shrink we call to size में reduce in size. That is called shrink. सिकुड़ जाना जिसे कहा जाता है, reduce in size. Pluck the flower, you know. Itinerant we call to nomad, जो इधर उधर घूमता फिरता हो. So what will be the answer? Immature, you can say. Now what can be the answer? See here, it is clearly given either synonym or antonym. ऐसे questions में generally आपको antonym ही मिलता है, direct synonym rarely you get. So yes, savant is something who is a scholar, who is experienced, intellectual, because आपके अंदर knowledge तभी आएगी जब आप बहुत ज्यादा क्या होंगे, experienced होंगे. So opposite will be postulant. Clear everyone? So when you know the meaning, when you know all the shades of a word, you will be able to give the answer also. Okay. So yes, the answer will be postulant.
Postulant basically we call to a person who starts taking religious study. So that is called, okay, antonym. So these are antonym pair. I hope you know that thing. Next, I guess this is the last word of vocab. No, one more word we have quickly. This is very, very common word. I hope you all know. Copulent. Pluck basically we call to don't pluck a flower. तोड़ना अंकिता, pluck basically we say na don't pluck a flower. Yes, I hope you all know corpulent basically we call to fat. It is a very formal word. So if you do not want to say someone that he is very fat, so you can say corpulent. Okay, fat you can say. So obese we can say. Okay, mota basically. So T is the correct. So corpulent. Yes, this is common word. So lean, can't it be the opposite? It can be the opposite, na? And the direction is saying lean and thin. I don't know how they have given the word. Lean can be the opposite. Lean on something, and lean and thin basically we use for something that is very this. मैम हिंदी बोलो ना, हिंदी सब तो बोल रही हूँ, किसी को हिंदी चाहिए, किसी को इंग्लिश चाहिए, मैं बोलूँ क्या? That is why I'm keeping it bilingual so that none of you face any problem. So corpulent. तो काफी हेल्थी है. You should prepare for mains. See, if you prepare for IBPS PO mains, so ultimately you are preparing for SBI prelims also. So almost they will cover, because mains means you are covering high level questions. Okay. So that is the correct word. So abase is the synonym. Okay. Now what is the meaning of the word emaciate? Emaciate is a verb basically. Emaciate, okay, emancipation and emaciation. These are two different words. Okay. Emaciate and emaciation. So don't get confused between emancipation and emaciation. Please concentrate on class guys, because these are very very close words. तो आपको vocab भी अच्छे से देखना होगा. Emancipation and emaciation. Okay. Yes, emaciate is a verb. So emaciation means weak. इसका मतलब भी वही होता weak. So emaciate is a verb. It means to become weak. कमजोर हो जाना. Okay. During examination time you didn't take care of health and you emaciated. So eventually you emaciated. It means you became weak because आपने अपने health का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ पढ़ाई पे focus किया. So that is why you emaciated. So that is also. So yes, emaciate is a verb. It means to become weak, whereas lean is an adjective. Gaunt also means lean. These all are synonyms. All these words mean synonym of this. Okay. ये सारे के सारे same है. Lean and thin. Okay. And weak. Emancipation, you know, freedom. Okay. Next question. The last, this is very simple quickly. ये तो बहुत ही सिंपल है. आई होप यू ऑल नो. एम्बेजलमेंट, इट इज वेरी वेरी कॉमन वर्ड. ये हमेशा आपको न्यूज में दिखता होगा. जब भी कोई फ्रॉड होता है, करप्शन होता है, यू गेट दिस वर्ड. नीला, व्हाट इज योर डाउट? आई डिडंट गेट योर डाउट. Emaciate, yes, it also means thin, but parts of speech differ. Emaciate means to become thin. Okay, so it is a verb. It means to become thin. Embezzle basically we call to misappropriation of money. Basically जो फंड वगैरह का जो घोटाला होता है, that is called embezzlement. Misappropriation of money. Okay, that is called embezzlement. Embezzlement से ही ये word निकला है, that is misappropriate. So A is the right answer. Okay. नो आइडिया रखी. इमेनेट, सॉरी आई डोंट नो. हिंदी मेंशन का एम्बेजल का मतलब बता तो नहीं, घोटाला, कि पैसे का घालमेल जो हम लोग करते हैं, किसी भी फंड वगैरह से पैसे इधर से उधर कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्बेजल. ओके. So this was all about vocab. We got so many good words. I hope you will remember these words. Now next question. Phrase replacement. Options are very close, guys. So don't be in a hurry to mark the answer. तो एक बार सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, गाइस.
E C D C. See, according to author Dishant Gautam, okay, a novel is difficult to write when compared to a play. So we are talking about comparison. So we need comparative degree here. There is a sense of hidden comparison. So we need a comparative degree. It will be more difficult to write or something like that. So simpler can be used, faster can be used, easier can be used, but this can be eliminated because we need a comparative degree. We are getting the sense of hidden comparison. It is like going for an election when one has to appeal to 1,000 people at a time, whereas in a book, one appeals to only one person. मतलब novel लिखना play लिखने के comparison में ज़्यादा difficult. Sorry, play लिखना is more difficult than writing a novel. तो प्ले लिखना ऐसा है कि जैसे आप इलेक्शन में जा रहे हैं जहां पर आपको बहुत सारे लोगों को अपील करना, दैट इज द सेंस यू आर गेटिंग. सो वी आर सेइंग दैट राइटिंग अ प्ले इज मोर डिफिकल्ट, राइटिंग प्ले इज मोर डिफिकल्ट. सो सिंपलर इज नॉट मेकिंग सेंस. ओके, सो प्ले राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट. तो अगर इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो नॉवेल राइटिंग इज इजी, isn't it? Novel writing is easy, so the answer will be C, easier. Faster का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा. So the confusion is between simpler and easier. इन दोनों के लिए हो सकता है. So even the second word can help you. Running for an election. Running for means when a candidate participates in an election, so that we use running for. Corruption, misappropriation is the same. Misappropriation. So misappropriation means you are not using the correct fund in a correct way. So that is corruption only, ultimately, AKR. That is not misapproximation. That is misappropriation. So there is a difference between. Is this point clear to everyone? We are saying that novel is more easy to write. It is easier to write, not difficult to write. Playwriting ज़्यादा tough hai in comparison to novel. So both these words are making sense. Running for election is also giving you a sense that candidates participating in an election. Next. Remunerate means to reimburse the money. Remuneration, salary वगैरह के लिए कहा जाता है. Remunerate means your salary, wages. Okay. Yes, money paid. ये तो सेकंड से ही आप कर लेंगे. अब देखिए ये इसलिए नहीं है कि आपको ये हो नहीं पाएगा, बट हियर यू आर गेटिंग वेरी गुड वोकैब. यहाँ पर आपको वोकैब बहुत अच्छे मिल रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मोटले? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मोटले? एनीवन हु हैज एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मोटले? हैप्पी आंसर इज ओके. मोटले वर्ड के मतलब क्या होता है? मोटले वर्ड बेसिकली वी कॉल टू वैरिड, मिसलेनियस, सिंपली यू कैन से miscellaneous, that is called motley. So जहां पर बहुत सारी चीजें हो, varied pattern हो, so that is called miscellaneous. Okay, पंचमेल, yes, correct, very good. motley. Hybrid पता है आपको, nasal पता है आपको, mangled, what do you mean by the word mangled? Mangled basically we call to, yes, mixed, varied, all these things you can say. Miscellaneous. Okay, miscellaneous questions आपके एग्जाम में आते हैं जहाँ पे सारे पैटर्न मिक्स होते हैं. Mangled basically we call to, you can say, this mutilated, mutilated, maimed, deformed, distorted, all these. Distorted. Okay, ये सारे नेगेटिव वर्ड है. मैंगल्ड इज अ नेगेटिव वर्ड. ओके, नो मैंगल्ड, वो मिंगल अलग हो गया, मैंगल इज डिफरेंट. मैंगल, रनिंग फॉर मीन्स कंटेस्टिंग एन इलेक्शन. आकांक्षा, रनिंग फॉर का मतलब हो गया कंटेस्टिंग एन इलेक्शन. ओके, सो इसका मतलब होता है बेसिकली म्यूटिलेट, डिस्ट्रॉय समथिंग. ओके, किसी की भी शेप को डिफॉर्म कर देना, दैट इज द मीनिंग. स्पॉइल्ड, यस, करेक्ट, यू कैन से स्पॉइल्ड. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स. मैंगल. सो वी हैव इन अमेरिका अ डैश स्पीच. अमेरिका में एक ऐसी स्पीच है दैट इज नीदर अमेरिकन, ना तो वो अमेरिकन है, ना तो वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश है, दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश, नॉर कॉलिक्वल इंग्लिश, ना तो उनकी वो इंग्लिश है, बट अ मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री. So mixture of all three is okay, but collection speech, no, a hybrid speech. A collection speech is not making sense because here you need an adjective. Speech is noun, so collection should be, here you need an adjective. So it is a hybrid speech. एक तरह की hybrid speech है, that is a combination of all these things.
Yes, hybrid speech is a new form of speech. So that is a mix of all these things. Okay, इन तीनों का जहां पर combination है. So combination of all these things is making sense. So many accent they have. Yes. Next, medley. You all know na medley. Medley. You haven't you heard in this music and all medley? It is related to same thing. Yes, mixing of songs and all. Medley. Song वगैरह से related word तो याद कर सकते हैं ना. It is mixture of songs and other things. Yes, medley. This is a good question. Of all these phrase replacement, this is a good one. So Jyotishmoy A, Chetna A, Sagnik third. Please go through the entire sentence carefully before marking your answers. पूरा सेंटेंस पढ़िए व्हाट सेंस यू आर गेटिंग बिकॉज दिस वन इज गुड. यहाँ पर देखिए अब वोकल टफ नहीं मिलेगा बट दिस इज अ गुड वन. E A all different tenses. चलिए देखें. Alice Walker's, he is the writer, you can say. The Temple of My Familiar, it is the name of his book. Alice Walker's book, The Temple of My Familiar. Okay, it is a book. Far from being a tight focused narrative, कि ये कोई बहुत ही confined narrative नहीं है कि किसी एक particular चीजों पे focus करे. Is instead a dash novel. अब हमें नहीं पता किस तरह की novel है because you have not read that novel. हमने तो नाम भी नहीं सुना, आपको पता ही नहीं वो किस तरह की novel है. Now this line will help you get the right answer. ये line आपको help करेगी right answer लेने में. Okay, so it is saying that roams, a novel that roams freely and imaginatively over 500,000. It means कि वो कोई focused narrative नहीं है कि किसी particular section को focus करके लिखा जाए. It covers a wide section, wide range of things it covers. Are you getting the meaning? It covers, that novel covers over 500,000. तो वो roams freely और बहुत सारी चीजों को वो cover करती है. So this second word will give you the sense that expansive is making sense. Simple. Clear everyone? So देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो always you will get the hint in the sentence itself. हमेशा आपको सेंटेंस में ही हिंट मिलेगा. So it will be focused and expansive. So D is the right answer. Those who said D, absolutely correct. So you will get the answer. Yes, Raul was the first one to say D. Very good. Next, this one. This is also a good one. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. Expansive, I told. Expansive basically, you know, covering vast section. बहुत सारी चीजें जो करते हैं. Concise का मतलब होता है very short. Concise, you know, brief. That is concise. Aloo samosa also mark D. Yes, you are right. Everyone is saying A. पहले इसमें आई गेस कि आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑप्शंस एलिमिनेशन इज द की गाइस. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए जहां पर आपको मीनिंग ना क्लियर हो, यू कैन गो थ्रू द ऑप्शंस. लेट्स सी. The village headman was unlettered. First of all, tell me what do you mean by the word unlettered here? What do you mean by the word unlettered here? क्या मतलब आ रहा है? Uneducated. Very good. Illiterate. Men of letters. Man of letters we call to letter word हमेशा किससे relate किया जाता है? Education से. So man of letters we call to educated. A person who is educated is called man of letters. We call to uneducated. A person who is not educated. Okay. So the village headman was unlettered, he was illiterate, but he was no fool. लेकिन वो कोई मूर्ख नहीं था. He could see through. See through means sense, perceive you can say. See, perceive, वो देख सकता था, समझ सकता था. The mystery of the businessman, is it making, उनके रहस्य को समझ सकता था. It is not making any sense. Mystery is not making sense. Deception can make sense. He could see through, he could sense the deception की जो cheating वो use कर रहे थे वो देख सकता था.
So here deception can make sense. Navit basically we call to inexperience. So the businessman was not inexperienced. It will not make sense. Okay. We need an adjective noun. Sorry, the article is given, so we need a noun. Preposition of is given, so we need a noun. So potential will not make sense. So all these three eliminated. Yes, see through means read between the lines. Correct, invincible. So A and D, these two are left. Okay. Now this second word will help you. He could see through the dash of businessman. Proposition, proposition means suggestion. Proposal you can say. अभी कल ही हमने ये word discuss किया article में. Okay, proposal that is called. And promptly moved him down or turned him down. ये भी अभी कल ही हमने एडिटोरियल में ये फ्रेज डिस्कस किया था, टर्न हिम डाउन. टर्न डाउन का मतलब टू रिजेक्ट अ प्रपोजल. तो उसने देख लिया, ही गॉट टू नो कि क्या उसके अंदर मतलब जो भी डिसेप्शन वगैरह उसके अंदर है. सो ही गॉट टू नो दैट डिसेप्शन एंड ही टर्न डाउन हिज प्रपोजल. इट मींस ही रिजेक्टेड हिज प्रपोजल. सो टर्न डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब जो आपने इतने दिनों से देखा है. तो अगर आप सिर्फ उसके बेसिस पे भी करेंगे तो ये आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. यू विल हैव द आंसर डी. Now, if you do not know the meaning, yes, sophistry basically we call to a false argument, deception. Sophistry basically, देखिए sophisticated is different thing. Sophistry basically we call to a false argument. किसी भी चीज को जीतने के लिए जो आप गलत आर्गुमेंट देते हैं, डिसेप्शन, चीट, यू आर चीटिंग अदर्स, सो दैट इज कॉल्ड sophistry. So ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं. Clear everyone? I hope it is clear. आगे बढ़ते. आज ग्रामर भी बहुत अमेजिंग है. आज का ग्रामर तो माइंड ब्लोइंग है. लेट मी सी हु विल गेट दिस. So this is break time for us. We are starting descriptive English for IBPS PO. So if you hope that you can qualify IBPS PO, तो I will definitely say कि please join this descriptive batch. Okay, bilingual होगी. So please join this descriptive batch. I will tell you everything. ऐसे letter pressy, यहाँ पे pressy लिखा हुआ है letter. But pressy is often not asked, but still I will make you prepare for pressy also. Okay, so be prepared for the worst. हाँ, she turned him down means she turned down her proposal. Okay. What about the Hindu editorial? I take every day, Manav, every day 7 a.m. I get up for you people. Okay. So that is. So we have the descriptive English course. ये आपका start हो रहा है 27 से. देखिए वीक में कितने दिन क्लासेस होते हैं because you need this. तो बहुत limited price है. आप मेरा कोड यूज कर लेंगे सबा. You will get additional maximum discount you will get. Okay. We are also starting personalized interview batch for RRBPO. There are many who qualified RRBPO means examination. So first of all, congratulations to everyone. Neeraj, every day you are asking the same question. Every day I will say the same answer. Right now we don't have time. So many classes. Okay. So alarm. Any tip to wake up early? That is your alarm. So earlier, before I started taking editorial, I also used to get up. Sometimes there were days कि I used to get up at 9 a.m. मतलब बीच में कुछ दिनों तक के लिए. Till my college time and before that, till the time I took break from job, I used to get up at 9 a.m. Okay. So it is like when you have certain thing in mind. जैसे मेरे पास आप ही लोग हैं कि अगर मैं क्लास नहीं लूंगी तो you will be waiting for me. Okay. तो आप वेट करेंगे तो इसलिए आई हैव टू गेट अप अर्ली इवन दो आई स्लीप एट 12 और वॉट एवर लेट नाइट भी मैं सोऊं लेकिन सुबह मुझे जल्दी उठना है बिकॉज ऑफ यू पीपल. कभी तबियत खराब हो गई दैट इज अनदर थिंग बट आई वेक अप फॉर यू सो यू शुड वेक अप फॉर योरसेल्फ. मैं आप लोगों के लिए उठती हूँ आप खुद के लिए उठ जाइए. ठीक है. बिकॉज इफ यू वांट सिलेक्शन तो आपको उठना पड़ेगा. So personalized interview batch also we are starting. So those who qualified RRBPO means examination, many congratulations. So join this interview batch so that you can ace your interview also, interview preparation. So there are so many names. You can use any faculty code, Krishan. Not only mine, you can use any faculty code. So this is my code. You can use this code for maximum discount. Okay. So this is PO mains batch. We are starting crash course for PO mains also. So here also you can use my code Saba for maximum discount. ये कब से start हो रहा है? Diwali is on 24th, right? 25th. 25th they are starting this batch. Okay. So this is the case. अभी टाइमिंग आई हैव नॉट डिसाइडेड. डिस्क्रिप्टिव की क्या टाइमिंग होंगी आई हैव टू सी माय शेड्यूल देन आई विल टेल यू द टाइमिंग. ओके. डेट स्टार्ट हो गया है 6 to 8 यस इन बिटवीन नहीं ओवर है. एंड इफ यू वांट सी इफ आई टॉक अबाउट बैंकिंग सुपर एलीट जैसे जिनको कोई कोर्स परचेस करना है समवन वाज आस्किंग इफ यू वांट टू परचेस एनी कोर्स so you will get all these classes except interview whether you talk about descriptive or you talk about this IBPS PO crash course. All these things are
included in banking super elite. ये सारे के सारे banking super elite में already included हैं. So you can use this banking super elite also. You can purchase for all the mock test and all the courses. Okay. And if you want to go for only mock test, then you can go for banking elite. Okay. तो सुपर एलीट में सिर्फ आपको इंटरव्यू बैच ही सेपरेटली परचेस करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें सुपर एलीट में इंक्लूडेड है. ओके. So this is my code Saba. You can use this code to uh, avail maximum discount. Okay. And this is my Telegram channel, Learn English with Saba. Those who have not joined yet, please join this Telegram channel for updates on every session and for PDF. हर सेशन के अपडेट के लिए PDF के लिए Telegram channel join करिए. Now please focus on grammar. एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए so that others can also join. Okay. This is the level of SBI PO means also. SBI PO means में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग एरर के. कमेंडेबल अजय, बहुत अच्छा काम. कमेंडेबल. Krishan, we can't predict cutoff. We are expecting between 50 to 55. Okay. Now, guys, please concentrate here. No unnecessary chat, please. See, these questions need your utmost attention. These questions need your utmost attention. So please concentrate on the session. There is only one thing that will help you get the right answer. Let me see who gets the right answer here. Invincible, did you take RRBPO means examination? Is there any means examination that you take, that you took? Whether it is IBPS clerk means or RRBPO means? Now, please listen to me carefully, guys. Although I already knew the answer, if I talk about already word, so already can be used in past indefinite tense. It can be used in present indefinite, present perfect tense. It can be used in, I knew the answer already, it will not make sense. C is not making sense. Okay. C is not, I knew the answer. See, when already word qualifies a main verb, it should be placed before the main verb, not after the main verb. Okay, invincible. So whenever already word qualifies any main verb, so it should be placed before the main verb, not the after the main verb. So this will be eliminated. Okay. Apart from this, also there are many factors. Although I already know the answer, all these forms are clear. ये सारे के सारे correct हैं. So, and he often invited me to visit him often. So, sorry, and he invited me to visit him often. And he invited me to visit him often. यहाँ तक same है. And he often invited me to visit him. That is also correct. अब देखिए ये often qualify किसे कर रहा है? Invited को qualify कर रहा है. अच्छा ये भी एक secondary thing है. Main thing आप देखिए यहाँ पर. Since I just have seen her in the square, I was never determined to yield this point. What is the sense you are getting? कि मैंने उसे देखा था तो I am never determined या मैं determined हूं कि मैं कभी भी इस बात को reveal नहीं करूंगा. See, this never word is qualifying the determined or it is qualifying this yield. तो ये आपको meaning पूरा change कर दे रहा है. If I say I am never determined to teach you, it means मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहती हूँ. That is the sense we are getting. So it is not carrying the sense. यहाँ पर sense आ रहा है कि although I have seen that, we are getting contrary sense. कि मैंने उसे स्क्वायर में देखा था, but I will never reveal this thing. मैं ये बात कभी भी reveal नहीं करूंगा. So this never is qualifying yield. It is not qualifying determined. तो जहां भी determined, not determined, never determined, it is not making sense because it will change the meaning. Okay. So I'm determined never to yield this point. Never to yield means never to reveal this point. Clear everyone? So this adverb पूरा रोल ये adverb play कर रहा है कि अगर आप इसे determined के पहले लगा देंगे तो it will change the entire meaning. So the right answer here is D. एक बार देख लीजिए आप लोग. Hurry up guys quickly. If you have any doubt, please do ask. Otherwise we will proceed because next question is also amazing. Clear everyone?
So adverb, I will give you 1 or 2 questions on adverb also tomorrow. Basically adverb qualify किसे करता है, that is okay. See, never is not qualifying. If you will say, I'm never determined to do something, I'm never determined to take this examination. So it means you never wanted to take that examination. So this never word is not qualifying the determined. It is qualifying the sense that कि I'm determined, I'm very much firm that I will not reveal this point. ये point मैं किसी को, जैसे उसको किसी के साथ उसका कोई secret रहा होगा, तो you don't want to reveal that secret. That is the sense we are getting. Determined is an adjective here. Determined is an adjective here. I'm determined. I determined. You can never say I'm determined means I'm determined. I'm firm. So it is used as an adjective here. Arju. जैसे I'm inclined. I'm interested. So it is the same case. Next question. पूरा सेंटेंस बहुत एम्बिगुअस है। पूरा सेंटेंस का ये है कि मुझे पहले से आंसर पता था, उसने मुझे बहुत बार इनवाइट भी किया है विजिट करने के लिए। ही ऑफन इनवाइटेड मी, ऑफन इज क्वालिफाइंग द वर्ड इनवाइटेड, कि उसने मुझे बहुत बार इनवाइट भी किया विजिट करने के लिए। सिंस आई हैव जस्ट सीन हर इन द स्क्वायर, मैंने उसे कहीं, स्क्वायर इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ओके मे बी, और नियर कुछ भी ऐसा सेंस आ रहा है इन द स्क्वायर। सो आई एम डिटरमिन्ड के, लेकिन फिर भी मैं उसे ये बात नहीं, ऑफन इज ऑल्सो एन एडवर्ब, ऑफन इज ऑल्सो एन एडवर्ब, सो दिस इज क्वालिफाइंग इनवाइटेड, इट इज क्वालिफाइंग द वर्ब इनवाइटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी इज द राइट आंसर ओनली, बाकी कुछ नहीं हो सकता। रीडिंग में आपको ये रॉन्ग लग रहा होगा कि आई ऑलरेडी नो नहीं होगा, राइट? सो हियर आई ऑलरेडी नो, आई हैव ऑलरेडी नोन, आई ऑलरेडी न्यू, ऑल दीज विल मेक सेंस, ये सारे के सारे सेंस कैरी कर रहे हैं। जो पूरे सेंटेंस को चेंज कर रहा है दैट इज नेवर एंड ऑफन। पोजीशन ऑफ एडवर्ब मींस हियर yield is also, yes, giving something, revealing something, okay? This is also one of the best questions, again excellent one. Yes, it can be used, Ankita, नेवर से एलिमिनेट हो जाएगा। डिटरमिन नेवर खाली देखेंगे तो गलत लगेगा अभिषेक, आप डिटरमिन नेवर टू डू समथिंग। 45 CB, this is also a very very good question. So here sequence of tenses, vocab, everything will play role. Sequence of tenses भी यहाँ पे बहुत important role play करेगा, vocab will also play a very very important role here. If I have money, enough money, आपको पता अगर यहाँ पे have होगा तो in principal clause we need will plus V1. So would have backpack will not make any sense. Okay, it is not making any sense. So it is eliminated. Okay. If I have had, I would have done. So would have plus V3 if you have. If you have, would have plus V3. Okay. So in principal clause you need had plus had. यहाँ पर past perfect चाहिए. You do not need present perfect. You need past perfect. Okay. So had होता तब आप यहाँ पे would have plus V3 का use करते हैं. Okay. So this is also not making sense. ये भी eliminate हो गया. If I had enough money, ये स्ट्रक्चर मैंने बहुत बार डिस्कस किया है. If I had money, तो had is V2 फॉर्म, और जब had होगा तो आप would plus V1 का भी यूज कर सकते हैं. तो पहले तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेशन कर, यू कैन एलिमिनेट दिस इन प्लेस ऑफ दिस ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अच्छा यहाँ पे हैव दिया है और इसके साथ वुड दिया है, सो आई टोल्ड कि जब यहाँ पे हैव होगा तो हियर द स्ट्रक्चर शुड बी विल प्लस V1, राइट? तो ये सारे के सारे एलिमिनेट हो गए. नाउ द क्वेश्चन डिफरेंस इज बिटवीन सी एंड ई. स्ट्रक्चर वाइज तो ये सही है, बाकी चीजें देखते हैं. बैकपैक इज अ नाउन ऑल्सो. बैकपैक यू नो वी कॉल इट अ बैग. And backpack as a verb, as a noun it means bag, and as a verb it means travel. I would backpack around the Europe, it means I would travel around the Europe. Okay, तो ये यहाँ पर as a verb काम कर रहा है. It is carrying the sense of travel. पहला तो ये word बहुत अच्छा यूज हुआ, I would backpack around Europe. Okay, but unfortunately I am broke. ये broke V2 form नहीं है. Broke. Broke basically we call to this bankrupt. Broke word as a noun it means, as an adjective it means bankrupt. I am broke means मैं टूट गया हूं, ये सेंस नहीं आ रहा है.
आई एम ब्रोकन नहीं कि मैं टूट गया हूं, ये सेंस नहीं आ रहा है। वी आर गेटिंग द सेंस आई एम बैंकरप्ट, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये एक अनरियल पास्ट कंडीशन की बात हो रही है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जो है पूरे वर्ल्ड ट्रैवल कर लेता। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस, वन सेकेंड गाइस, लेट मी से क्या आ जाता है। एनीवेज, आप पूछिए, अपने डाउट पूछिए आप लोग। ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकंड गाइस, वन सेकंड। यस, हाँ, नाउ यू कैन सी आई एम ब्रोकन का मतलब लिटरल मीनिंग होता है आई एम ब्रोकन मीन्स लाइक मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। आई एम ब्रोकन का मतलब क्या है कि आई एम डिसहार्टेंड, ओके, आई एम डिस्करेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोकन। सो हियर आई एम टेलिंग यू दिस ब्रोक इज नॉट यूज्ड एज अ वर्ब, ये ब्रेक ब्रोक वाला वर्ब नहीं है। यू शुड नो द मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड की मल्टीपल मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। सो ये वर्क वाला ब्रोक नहीं है, इट इज नॉट द ब्रोक वर्ब। So I am broke means here it is used as an adjective that means bankrupt, penniless, you can say penniless. Broke basically we call to penniless कि 1 रुपए मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक भी रुपया बचा नहीं है, that is the sense we are getting. हैव हैड एक साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते ईएल क्लासेस, इसके लिए फिर पूरा आपको वो करना पड़ेगा। तो क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी टेंसेस की। तो हैव हैड वी बेसिकली यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ जिन्हें भी डाउट है। ये वाला स्ट्रक्चर गलत है बिकॉज हैव के साथ आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब विल प्लस हैव का यूज करते हैं। इसे आप सिंपली स्ट्रक्चर के बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड इज हैव हैड नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं बनता है, स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस वी3 का होता है। सो सेकंड इज आल्सो एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ थर्ड समवन इज सेइंग कि मैम इफ आई वर होता है, इफ आई वर भी होता है, इफ आई हैड भी होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूसेज ऑफ हैड एंड वर, हैड और वर के यूसेज में डिफरेंस है। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कुछ जगह पे देखिए दोनों पास्ट टेंस है बट देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द यूसेज ऑफ हैड। इफ आई से आई हैड अ डिमांड and if I say I was in demand, is it making the same sense? It is changing the entire meaning. If I say I had a demand and if I say was in a demand, I was in demand, तो they both are saying यहाँ पर I am demanding, मेरी एक डिमांड है, I am demanding something and I was in demand, मैं बहुत ज्यादा डिमांड में थी, मे बी पॉसिबल कि मैं बहुत ज्यादा फेमस थी, मेरी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी, दैट इज द सेंस वी आर गेटिंग। सो यहाँ पर वर का केस अलग है, जैसे इफ आई वर रिच, इफ आई वर बर्ड, तो वहां पर आप वर का यूज करते हैं। बट हियर इफ आई हैड, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन कि मैं पैसा थोड़ी नहीं, यहाँ पे आप थोड़ी ना बोलते कि इफ आई वर इनफ मनी, कि मैं पैसा नहीं हो गई होती, मेरे पास अगर पैसे होते, दैट इज द सेंस वी आर गेटिंग। ओके, सो यस, सो द सेम थिंग कि यहाँ पर मनी की बात हो रही है, तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ट्रैवल कर लेती। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल पास्ट कंडीशन, अनरियल पास्ट कंडीशन की बात हो रही है। सो दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो करेक्ट and if you go as per the meaning, so this entire sentence is correct, C is the correct answer. क्लियर एवरीवन? हैव हैड क्यों गलत है कृष्ण, फिर मैं बोलूंगी। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस वाईटी पे वीडियो है, आप उसको एक बार देखिए, गो थ्रू द वीडियोस ऑफ दिस। प्रेजेंट परफेक्ट बेसिकली वी डू नॉट यूज दिस इन स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बाकी यूसेज होता है राखी, तो उसके बहुत सारी चीज। यस, आई एम ऑलवेज इन डिमांड, आई वाज इन डिमांड, ऑल दीस थिंग्स। ओके, सो दैट इज द आंसर। चलिए एक और कर लीजिए, आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ हो पाएगा। हरी अप गाइस, आई टोल्ड स्पॉटिंग एरर, ये बेसिकली जो पीओ में आए हुए हैं, आई एम डिस्कसिंग दैट। ओके, देखिए अगर आप यहाँ पर अगर मैं ग्रामर की टॉपिक ले रही हूँ, जैसे टेंसेस जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, दोज हु हैव टाइम और दोज हु वांट टू सी द सेशंस ऑफ टेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, तो स्टार्टिंग व्हेन आई जॉइंड ऑलिवोर्ड प्लेटफॉर्म, पहले मैंने ग्रामर ही क्लियर करने की कोशिश की है। इवन वी हैव फ्री सेशंस ऑन टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, इन सबके फ्री सेशंस भी हैं आपके ऑलिवुड प्लेटफॉर्म पे। अब जाइए सर्च करिए टेंसेस बाय सबा मैम, यू विल गेट दैट। हेलो समोसा, आर यू गोइंग टू गिव मी 1 crore आफ्टर बीइंग अ बैंकर?
PDF you will get on my Telegram channel, Pritisha. So first you give me 1 crore, then I will tell you मैं कहाँ जाऊंगी, आपको बता के जाऊंगी. See. Let me see. The judges finally distributed the awards among the most active children talking at length. First of all, tell me what does this phrase mean? Talking at length. Talk at length. What does this phrase mean? इसका मतलब क्या होता है? Talk at length is a phrase. It means a discussion, extensive discussion. काफी ज्यादा discussion के बाद. So discussion. Bank is yours. पैसा पूरे आप लोगों के हैं. Yes, lengthy conversation after having much discussion. Lengthy discussion. Correct. So that is the meaning. So lengthy discussion. So the judges finally distributed the awards among the most active children talking at length among themselves. So it is not making sense. Children were not talking at length. Okay. The judges finally distributed awards talking at length. अब देखिए यहाँ पर भी वही सेंस आ रहा है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. Talking at length ये फ्रेज क्वालिफाई किसे कर रहा? Was the award discussing? Award was not discussing. क्या चिल्ड्रन डिस्कस कर रहे थे? चिल्ड्रन वर नॉट डिस्कसिंग. द जजेस टॉकिंग एट लेंथ among themselves. कि जजेस जो है आपस में काफी डिस्कशन करने के बाद फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड अवार्ड्स अमंग द मोस्ट इनएक्टिव चिल्ड्रन. कि उन्होंने अब वो काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन के बाद दे डिड व्हाट, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स अमंग द मोस्ट एक्टिव चिल्ड्रन. सो सी इज द राइट आंसर. क्लियर एवरीवन? तो ये सिंपल सी बात है. तो जजेस वर टॉकिंग एट लेंथ, वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे. सो दिस इज द राइट आंसर. सी इज द गुड. यस. ये बाद में करूंगी मैं. लीव इट ऑल दिस क्वेश्चंस. नाउ वन क्वेश्चन यू हैव टू डू दिस. एक ये क्वेश्चन कर लीजिए बस. among themselves is correct. अपने आप में. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट समथिंग, जैसे आई डिड इट माई सेल्फ, शी डिड इट हर सेल्फ, तो जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो वी डू दिस. चिल्ड्रंस, हु रोट दिस वर्ड चिल्ड्रंस? गिव मी 1000 रुपीज इमीडिएटली. ये किसने चिल्ड्रंस लिखा है? कृष्ण, आई विल किल यू, आई एम टेलिंग यू. हाउ कैन इट बी चिल्ड्रंस माय डियर? कैसे चिल्ड्रंस हो सकता है? चिल्ड्रन इन इटसेल्फ इज प्लूरल ना. सो इज देयर एनी वर्ड दैट इज चिल्ड्रंस? Children in itself is plural. Yes, it is a plural noun. Child is singular, children is plural. See, really, Krishan, sometimes you are beyond my comprehension. I don't even know whether you are asking these genuine questions or simply just to attract everyone's attention, you are asking these questions. Apostrophe, we can, even you can't use apostrophe after S, Neeraj. Apostrophe will be before S. Now let me see. See here you have been given 5 sentences and you have to find which one is not fit as per the context. ये पूरे context के according क्या नहीं हो सकता है. ठीक है? So India has 13 of the 20 most polluted cities in the world. India में मतलब 20 most polluted में India जो है उसके 13 cities है. मतलब 13 cities India के ही है most polluted cities में. According to the World Health Organization, as per WHO report, the government should redouble its effort. In the government को अपना effort redouble कर देना चाहिए to combat climate change को combat करने के लिए, which will naturally slash not just greenhouse gas emissions but particulates as well. Slash means reduce. कि यहाँ पर एक उसकी बात solution की बात की जा रही है. Okay, here we are talking about solution, here we are talking about problem. Next, every year, more than 500,000 people are estimated to die prematurely because of air pollution. तो सोचिए हर साल pollution की वजह से भी लोगों की death हो रही है. So here also we are talking about problem. Okay, we are talking about problem.
देखिए सारी चीजें पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है. आउट ऑफ दीज विच वन इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दैट वी हैव टू गिव. ओके, while air quality tends to worsen around this time of year as millions of Indians light firecrackers. दिवाली की बात हो रही है, एकदम एकदम appropriate टाइम इस क्वेश्चन का. सो दिवाली में दिल्ली आप आके देख लीजिए इस टाइम पे, यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ. ओके, आप सांस भी नहीं ले पाएंगे यहाँ पर. So the problem is not limited by season or geography. So basically this problem aggravates during Diwali. दिवाली के टाइम पर ये प्रॉब्लम ज्यादा एग्रावेट हो जाती है, इसीलिए फायर क्रैकिंग को वो बैन भी कर दिया जाता है. ओके, सो लाइटिंग फायर क्रैकर्स दैट इज बैंड आल्सो. सो दिस प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड बाय सीजन और ज्योग्राफी. ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सीजन में पॉल्यूशन होती है, बाकी में वी डोंट हैव पॉल्यूशन. ओके, सो दिस इज आल्सो प्रॉब्लम वी आर टॉकिंग अबाउट. The weak air pollution in New Delhi has been truly off the chart. जैसे ही आएगा आपको न्यूज में दिल्ली दिखेगा पॉल्यूशन के मामले में. So tiny particulates which are especially deadly, top 999 micrograms per BU. Here also we are talking about problem. I didn't mention. So this is the capital where this problem is there. So you don't have that air pollution problem in this Bangalore and all. So basically it is in. हाँ, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. न्यूज़ में भी आप देखेंगे दिल्ली होता है, तो कैपिटल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेटेड हो जाती है. सो इट इज़ गिवन आल्सो देयर. ओके, तो दिल्ली में ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं. And since I'm in Delhi, so I know. Okay, so so we are unable to breathe also, so that is also the reason कि I can experience कि यहाँ पर क्या situation I can experience it. Okay, वैसे pollution तो हर जगह ही है. So see now what happens कि देखेंगे तो options are very very close. All the sentences are discussing talking about problem only. यहाँ पर देखिए सारे air pollution की बात कर रहे हैं. तो सब में अगर आप देखेंगे कौन सा odd one out है that does not fit into the theme, that is B. Because in yes. B does not fit. Correct, Jyotishmoy. Because in B we are talking about solution, wherein in others we are talking about pollution. Okay, तो arrange करने के लिए बोला नहीं है. Simply we have to talk about this. कुछ भी हो सकता है. कुछ देखिए यहाँ पर it can be, जब भी आपको एलिमिनेट करने के लिए आता है कि विच डज नॉट फिट इनटू द थीम, सो आप कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है. फॉर एवरी पैसेज यू विल हैव सम डिफरेंट थिंग. ओके, सो इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द सेम थिंग. I didn't get it out. So this is all about today's session. This is your homework question, guys. एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है. So try to this homework. Okay. So thank you everyone. I'm ending this session. Please subscribe to our YT channel. एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. Like this session. See, children's. This is also wrong. Because children is already plural, so you cannot add s to children. Child is singular, the plural is children, so there is no concept of s. Okay, another point, even if you have to use apostrophe, so apostrophe, since children is already plural, so you can't use apostrophe after s. So there will never be a word like this, apostrophe after s. ये हमेशा गलत होगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है. So the correct word is children's. Even if you are using apostrophe s, it should be used before s. Okay, because children is already plural. I hope now it is clear to you, Krishan. Okay, so I hope it is clear to you. तो जैसे आप कह सकते हैं चिल्ड्रंस स्कूल. चिल्ड्रंस स्कूल्स में सारे बच्चों का स्कूल है, सो द apostrophe should be before s, not after s. So someone said, किसी और ने भी कहा था कि apostrophe will be after s. Neeraj said. So Neeraj, that is not the right way. Okay, that is not the right way. Okay, so it is wrong. So I hope it is clear. Thank you guys. Please like this session, share this session. Okay, आज भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. So thank you everyone. I'm ending this session now.